A very good morning, students. Myself, Vishal Pandey, and let us continue the topic land, soil, and water resources. So, today we are taking conservation of soil. If you see how we can conserve the soil, how we can protect the soil, the removal of topsoil is called soil erosion. If soil is carried away by water or river, then that particular work is called soil erosion. If unchecked, it can even lead to depletion of soil or soil degradation. What is soil degradation? The decreasing of soil from a land, or you can say, when soil erosion take place, it is also known as soil degradation. We know that soil is a vital resource which is responsible for the sustenance of all plants, animals, and human beings. We all are aware, children, that soil is very important for the sustenance. Sustenance means living of all plants, animals, and human beings. Without soil, animals cannot graze because grass will not come on the platform, and human being cannot produce crops, and animals a forest, etc., and etc. If you talk about this conservation of soil is very much important, because if you want to save soil, if you want to facilitate your crop production, if you want forest, if you plant some forest, soil degradation or soil erosion will be very much less in terms. So in that sense, conservation of soil is very necessary and important as well. Now let us have a look on some methods of soil conservation, how we can conserve soil. First one was we have to conserve, but this is how you can tell anyone to conserve soil. The first point is murking. Mulching. Murking. What is murking? The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw or peat to prevent loss of moisture from the soil. This process of conserving soil by retaining the moisture in the soil is called murking. Murking ground is covered with rice straw to help eggplants grow. If you see in the portrait on the screen, this is the way how you can do murking crop production, by building some extraordinary, the soil you can see in this video. I will help you to understand by explaining you the contour farming in the next slide. Let us see what is contour farming. As you can see on the screen, people used to make some hills, some hills, like so that the stones are used to build barriers across the slope. If you build the barriers in the field, the crop which you had planted might not be carried away by the pressure of water. So contours are imaginary lines connecting places that lie at same altitude. Trenches are made in front of the barriers to collect water. This way of preventing soil erosion is called contour barrier or contour bunding, and this farm is called contour farming. तो ये याद रखना है आपको कि जब कभी हम ऐसे फसल लगाते हैं कंटूर फार्मिंग के थ्रू, तो वहाँ पर सॉइल इरोजन का ख़तरा बहुत ही कम होता है, जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इस तरह की फार्मिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया में कंटूर फार्मिंग करी जाती है। सो कीप दिस इन योर माइंड as well as marking also. Now next is plugging. How you can do plugging and how you can conserve soil by this type of farming. Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents erosion by plugging the gullies to prevent soil loss. Ultimately प्लगिंग में हम क्या करते हैं? रॉक्स को यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर आप कहीं पे भारी भारी रॉक्स रख देंगे, हैवी रॉक्स रख देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ दैट
द वाटर कैन नॉट टेक अवे दोज रॉक्स, और उस रॉक्स के नीचे की सॉइल जो है वो क्या होगी, वो बची रहेगी. The next you have terrace farming. What is terrace farming, children? Terraces are made on steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. The terraces reduce runoff and soil erosion. This method of conserving soil and utilizing hill slopes to grow crop is called terrace farming. टेरेस फार्मिंग में स्लोप बनाया जाता है जिससे कि वाटर का जो रेशियो है वो सॉइल को बहा नहीं पाता. इट मीन्स सॉइल इरोजन डजंट टेक प्लेस इन टेरेस फार्मिंग. कीप दिस इन योर माइंड. नेक्स्ट इज intercropping and crop rotation. What is intercropping and crop rotation, children? Whenever you see in your village, whenever you go to your village, you see that in a particular field sometimes your parents produce wheat, and in the other season he produce rice, then again wheat and again rice. What is this? This is the crop rotation. Whenever you rotate the crops, the fertility of your soil increases. So if you want to increase the fertility of your soil, you have to rotate the crop. That is what it is written here, that scientific methods like intercropping and crop rotation also help conserve soil. तो इससे क्या होगा, आपकी सॉइल फर्टाइल भी होगी और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल भी होगा, सॉइल का नुकसान कम होगा. कैसे, आइए देखते हैं. इंटरक्रॉपिंग रिफर्स टू ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज and sown at different times to protect the soil from rain wash. Crop rotation, that is growing different crops in the same field one after the other, also helps to conserve soil. For example, अगर आपने एक ही फील्ड में कभी वीट लगाया, कभी शुगर केन लगाया, फिर कभी आपने राइस लगाया, कभी पोटैटो लगाया, तो उसका आपने रोटेशन किया, तो इस तरह से आपकी फर्टिलिटी उस सॉइल की बढ़ जाती है. तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी सॉइल हो जाएगी, जिसमें कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन की जो मास है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. इफ़ यू सी शेल्टर बेल्ट्स, what are shelter belts? We are going to discuss this as well. Shelter belts in the coastal and dry regions where winds of high speed can blow away the topsoil. Rows of trees are planted around farms. These trees check the wind, prevent soil erosion and act as shelter belts. What are shelter belts? Whenever you stand in a field, in a मैदान, और सपोज करो कि विंड बहुत तेज चल रही है, तो वहाँ पे आप हो सकता है कि उड़ जाएं विंड के साथ, आंधी के साथ. बट वेन एवर यू स्टैंड इन फॉरेस्ट, चारों तरफ से ट्रीज़ हैं आपकी तरफ, और वहाँ पे बहुत तेज़ आंधी चलेगी, तो आप बच सकते हैं उन पेड़ों की वजह से, उन ट्रीज़ की वजह से. सिमिलरली ट्रीज़ आर सेफ गार्ड, दे आर शेल्टर बेल्ट्स फॉर सॉइल इरोजन एज वेल. जब हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में आप देखें, वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता. सॉइल इरोजन कहाँ होता है, जहाँ पे मैदान हो वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है. तो इस सेंस में जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ही कम होता है. अदर मेथड्स हैं एफॉरेस्टेशन करना, पेड़ पौधे काटना, उससे भी सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, तो उसे भी हमें नहीं करना चाहिए. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड एज वेल. वॉच इट. थैंक यू सो मच.